Hi folks, so this is chapter 2, part 2. Economic review में global public debt to GDP ratio is expected to approach 100% by 2030. Global public to GDP. ठीक है. Global goods and services trade volume recovered 3.8%. US dollar remained firm throughout the year, putting downward pressure on other, ठीक है, and emerging market economic currencies. फिर बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड में ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इम्प्रूव टू 7.6% in 2024-25, buoyed by rural consumption demand even though urban demand exhibited some moderation. ठीक है. तो ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये इम्प्रूव हुआ है टू 7.6%, जो कि हुआ है बेसिकली बाय रूरल कंजम्पशन डिमांड इवन दो अर्बन डिमांड एग्जिबिटेड सम मॉडरेशन. मतलब मेनली जो हुआ है रूरल कंजम्पशन की वजह से हुआ है 7.6% PFCE, growth in PFCE, which is private final consumption expenditure. The share of private final consumption expenditure in real GDP, ठीक है, increased to 56.7% percent in 2024-25. The share of private final consumption expenditure. Government final consumption GFC grew at modest 3.8% in 2024-25, following a robust expansion of 8.1% in 2023-24. The rate of gross domestic investment in the Indian economy measured by the ratio of gross formal capital formation to GDP at current prices declined to 31.4% in 2023-24 from 32.6% in the preceding year. So ratio of gross formation capital formation to GDP at current prices declined to 31.4%. Gross domestic saving as a percent of gross national disposable income remained steady at 30.3% in 2023-24, primarily due to a decline in general government saving. The government spent more money than it collects in revenue. तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है एज पार्ट ऑफ परसेंट टू ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिमेन स्टडी एट 30.3%. ठीक है. मतलब गवर्नमेंट सेव करने के ज़्यादा स्पेंड कर रहा है. इंडिया का शेयर जो है इन ग्लोबल R&D एक्सपेंडिचर रोज फ्रॉम 2.1% इन 2000 टू 2.6% इन 2023. ठीक है. इंडिया सिक्योर्ड 39th पोजीशन अमंग 133 इकोनॉमीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024. RBI का बैलेंस शीट moderated to 22.8% of GDP as at March 2025 from 23.5%, तो 22.8% अभी है. The growth in CIC, ठीक है, the major constituent of RM, जो रिजर्व मनी है, the major constituent of reserve money with a share of 76.9% recovered to 55.8% during 2024-25 from 4.1% year ago, reflecting the impact of withdrawal of 2000 banknote as noted earlier. ठीक है. तो रिजर्व मनी का जो है उसका ग्रोथ जो है वो रिकवर 5.8% हुआ. ठीक है. ग्रोथ इन CIC, the major constituent of reserve money with a share of 76.9% recovered to 5.8% during 2024-25 from 4.1% a year ago, reflecting the impact of withdrawal जो है वो 2024-25. ठीक है. बैंक नोट्स जो कि विड्रॉ हो गया. मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड मनी मेनली कंसिस्ट ऑफ currency with public and aggregate deposits of banks on the component side liability. Money supply जो है broad money consist with public CWA and aggregate deposits of banks on the component side. ठीक है. M3 recorded a growth of 9.6% as compared जो कि पहले 11.2% था, driven by bank deposits. अभी 9.6% है. On the source side asset, the expansion in M3 was mainly driven by bank credit to the commercial sector, which grew by 11.8% in 2024-25. Excess holdings of statutory liquidity ratios, securities of the scheduled commercial bank were 10.3% of NDTL as on March 2025. So excess holding जो है of SLR securities of scheduled commercial bank were 10.3% of NDTL, net demand time liability.
RBI increased the limit for holding securities under the held to maturity category from 22% to 23% of NDTL। ठीक है, 1% बढ़ा दिया है। M3 जो है रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 9.6%। एक्सपेंशन है M3 सेक्टर में, वो बेसिकली बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर आया है। ठीक है, 11.8%। एक्सेस होल्डिंग ऑफ SLR जो है बाय SCBs जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, 10.3% ऑफ NDTL। 10.3% ऑफ NDTL। RBI इंक्रीज किया अपना HTM कैटेगरी, हेल्थ टू मेच्योरिटी कैटेगरी, फ्रॉम 22 to 23%। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट वॉज सस्टेन्ड। बैंक ग्रुप पब्लिक से रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ देन दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। ठीक है, मोर क्रेडिट देन डिपॉजिट, बैंक क्रेडिट एक्सेस रिटेल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। Fiscal deficit came down to 4.7% of to 5.9 because of the decrease in revenue capital expenditure. With the introduction of the fully accessible route effective जो April 1st 2020, FPIs have three channel of investment foreign portfolio investors: the general rule, voluntary retention route, VRA, and FAR. Under FAR, certain categories of central government securities are open fully for non-resident without any restrictions apart from जो फॉरेन जो FAR है, ठीक है, उसमें certain categories of central government are open fully for non-resident without any restrictions, और जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी अवेलेबल है। द 40 करेंसी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर, जो नीर है वो 0.3 और उसका ठीक 5 गुना रीर है 1.5% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज मार्जिनली बाय 0.1% ईयर ऑन ईयर। इंडिया का टोटल रेमिटेंस स्टूड एट $137.7 billion ड्यूरिंग 2024-25। The global environment for international investment continued to be challenging amidst volatile external financial conditions, heightened global economic concern, prolonged geopolitical tensions. Global environment for continue to be challenging। ठीक है, FDI 0.4 बिलियन है, 10.1 बिलियन है। FPI जो है 1.7, और ये हो गया 41.6 बिलियन। पहले था, अभी जो है 0.4 है, 1.7 है। So, ये है।